Hello, hi everyone. Very good afternoon. So let's start with today letter writing. So here we have Kate's note. So assume that today's date is 30th of August 2019 and you are a nurse at boarding school. So Jack Patterson, your school student, and has complaining of the hair loss and associated depression. So here we have the detail of student Jack Patterson, date of birth they have given, even age here they have mentioned, then address, school Holy House School, and social background here they have given, like student at boarding for the past 8 years, parents work and live abroad, father male pattern baldness, onset in 15th, mother depression, onset in the 40s, non-smoker, 20 unit alcohol per 4 week, and karate black belt and champion swim. So here we have presenting complaints. So alopecia, hair loss from 13-year intermittent cycling. Etiology is not confirmed. And treatment summary here they have given, like March 2014 school clinic. He was present in the school clinic with the hair loss in the patches, and maybe it could be related to anxiety. And onset school bullying incident, patients had not a major thing referral to trichology. Then in May 2014, again trichologist and no etiology established. Even May 2014 में भी उसकी etiology established नहीं हुई और possibly exerted by maybe stress, and उसको according he was prescribed for steroid cream in 2014 और 2018 की treatment history में no further hair loss, intermittent hair regrowth, but in December 2018 return of anxiety and pronounced hair loss. So journal health checkup loss is 6 kg over the last 2 months. Recommended to see the doctor, hair loss, anxiety, weight loss, and student reluctant. Ask about the natural remedies. Example, homeopathy discussion, re-efficiency, still keen to try. So main first we need to check the treatment summary. ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो पेशेंट की एलोपेशिया ही है और जो जिसका ऑनसेट था 13 ईयर से ही स्टार्ट हो गया, बट अभी हमारे पास जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है मार्च की हिस्ट्री है, मार्च 2014, देन मई 2014, then 2014 to 2018, and this one your recent history, February 2019, no result पर cost implication of the homeopathic treatment. तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इवन स्टार्ट किया बट उससे भी एज सच कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई पेशेंट की कंडीशन में, और मार्च 2019 में उसको रेफर किया गया स्कूल काउंसलर के पास, बट उसने काउंसलिंग सेशन अटेंड नहीं किया. देन मई 2019 में अगेन चेकअप, अल्कोहल कंजप्शन 28 यूनिट्स पर वीक, उसने अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीज कर दिया. देन इन जून टू जुलाई 2019 में एग्जाम टाइम में ड्यू टू एक्सट्रीम एंग्जाइटी necessity to arrange a separate examination room. ओके, सो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि हमें उसका सेपरेट एग्जामिनेशन रूम प्रिपेयर करना पड़ा. देन हेयर लॉस इंक्रीजेस एंड 30th of August 2019 स्टूडेंट कंसर्न अबाउट ट्रांजिशन टू यूनिवर्सिटी शॉर्टली एंड इंडिपेंडेंट लिविंग. ओके, सो अभी करंट कंडीशन में पेशेंट कंसर्न है कि उसको अपने स्कूल से अभी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना है, बट अभी वो वरीड है रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट लिविंग. So letter to university medical practice monitoring के लिए organize a special exam arrangement. Now here we have writing task using the information given in the case note. Write a letter to Mrs. Cullen, a university practice nurse. In your letter, senior nurse practitioner है University of Markbank Health Center. So this was your complete address. Okay, so this letter is entirely different from your referral letter. यहाँ पे आप लेटर लिख रहे हो एज ए स्कूल हेल्थ नर्स. तो स्कूल हेल्थ नर्स आप लेटर लिख रहे हो फर्दर यूनिवर्सिटी के लिए, बिकॉज अभी करंट जो आपके पास पेशेंट है ही हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टी. ठीक है, वो डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज जो भी उसकी ऑन गोइंग एलोपेशिया की कंडीशन है, तो इवन ही इज़ फाइंडिंग डिफ़िकल्टी कि वो कैसे अपनी स्कूल लाइफ से वो यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होगा, और जो भी उसका एक ट्रांजिशन का एपिसोड है ड्यू टू एलोपेशिया उसको काफ़ी ज़्यादा उससे कंसर्न है. अब ये कंप्लीट पेशेंट की कंडीशन है. अब इस कंडीशन के बेस पे इसका ओवरऑल जो केस नोट है हमें क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड इन 3 बॉडी पैराग्राफ.
जो अभी इसके पास हमारे पास करंट हिस्ट्री है, सोशल बैकग्राउंड है, ठीक है, पेशेंट की ट्रीटमेंट समरी है। इस ट्रीटमेंट समरी को वी नीड टू डिवाइड इन टू डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ। जो इसकी प्रीवियस था, जो इनिशियल कंडीशन थी, फर्स्टली वी नीड टू राइट ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, वो ब्रीफ में ही हम मेंशन करेंगे, और जो उसकी करंट सिनेरियो है वो मेंशन करेंगे। बिकॉज जब भी हम कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, वी नीड टू चेक टू whom वी आर राइटिंग लेटर, और उस पर्सन के अकॉर्डिंग मेन कंटेंट सिलेक्शन हमें कैसे करना है, और उस पर्सन के लिए कि जो रीडर है, रीडर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास सीनियर नर्स प्रैक्टिशनर है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, और सीनियर नर्स प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, सो दैट वो आगे फर्दर कंटिन्यू उसके लिए प्लानिंग कर सके उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये हमारे पास ट्रीटमेंट समरी है, मार्च 2014, मई 2014, 18, और ये करंट कंडीशन है। अब वी कैन डिवाइड इन टू डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ। सो फर्स्ट स्टार्ट विद योर date. So date already they have given at the top, today's date, so 30th of August 2019. Then after writing date, then address, complete address we have to write, then your salutation and patient full name, or date of birth, even age they have mentioned, in case if you want to write here age, so even age you can write here. And your purpose of letter, why you are writing this letter. So I'm writing to refer Jack Patterson, an 18-year-old student and Holy House School, who will shortly commence university study at the Marchbank, and it would be appreciated to provide him ongoing monitoring and support during his transition to independent living. Because this one our purpose क्या है, क्योंकि एज ए स्कूल हेल्थ नर्स, ठीक है, अभी हमें स्टूडेंट को कहाँ कमेंट अपनी स्टडी स्टार्ट करेगा, वो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करेगा, तो उसकी जो ये ट्रांजिशन का एपिसोड है, उसमें नर्स को, जो सीनियर नर्स है, वो हेल्प करेगी। तो वो किस वे में हेल्प करेगी, उस बेसिस पे हमने इस पर्पस को मेंशन किया है कि उसकी जो फर्दर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है, सपोर्ट है, उसको प्रोवाइड करना है। बिकॉज योर पर्पस शुड बी क्लियर कि आप किस रीजन से पेशेंट को रेफर कर रहे हो। Then your body paragraph first. Jack Patterson presented in the March 2014 with a patchy hair loss and anxiety following a bullying incident at school. He was referred to a trichologist. However, no clear etiology was established. Therefore, topical betamethasone cream was given but later discontinued due to the adverse effect, and his condition was managed with no significant deterioration. Besides, his symptom worsened in December 2018. As a result, he had lost 6 kg of weight with increased level of distress. So from here we have uh, write this information like March 2014, because no need to write each and everything, because we need to just brief the complete information. जो previous treatment summary है उसको हमें brief करना है. So 2014 और even जो भी previous उसका ट्रीटमेंट था, जो भी हमें उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, जो भी पेशेंट ने साइन और सिम्टम एक्सपीरियंस किए, वो हमने अपने बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में इलेबोरेट कर दिया है. देन आफ्टर बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, सो हेयर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारा जो अभी पेशेंट का रिसेंट ट्रीटमेंट है. सो रिसेंट जो कंडीशन है पेशेंट की, 2019 में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैड प्रूवन ineffective and contributed to low mood, and he has also experienced the difficulty in maintaining the peer relationship. So in 2019 he declined counseling most recently, and his anxiety intensified during examination. Now as a apart from this, uh, alcohol intake has also increased approximately 28 units weekly. तो ये पेशेंट का भी करंट सिनेरियो है. देन your discharge plan, your further planning in view of the above. He has been experienced ongoing psychological distress and concern regarding university adjustment. So please continue monitoring of his mental well-being and assistance with the special examination arrangement. Okay, then your closing statement, kindly do the needful. Then your sign off, yours sincerely. Again, one line space, school nurse and Holy House School. सो एज ए स्कूल नर्स आप इस वे में कंटेंट सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास सिमिलर कंटेंट इफ यू विल गेट इन योर फाइनल एग्जाम. So what are the important information you need to write in your body paragraph? You need to brief, because no need to write unnecessary information. So moving further,
what are the main key of OET letter writing? So these are the tips for nurses especially. First, understand the purpose clearly before writing any task. Why am I writing this letter? What action is needed from the reader? And your purpose should be clear in the first paragraph. For example, like अगर patient की need है urgent assessment से related, transfer of the care, home care request, discharge update, referral for further management. Like I'm writing to refer this patient into your facility as he requires urgent assessment and maybe immediate treatment. So, like in this way, we can use these uh, phrases as well in your purpose, like transfer of care. Like I'm writing this letter to request you a home visit. I'm writing this letter on behalf of this patient who required the home care. So like in this way you can change your purpose as well accordingly कि आपके पास कंटेंट और मेन रिक्वायरमेंट क्या है आपके केस नोट की. Then remember, a weak purpose lower the marks immediately. Then second point, identify the reader correctly. The tone and the details depend on who received the letter. Example, social worker को if you are writing letter, so home or social concern हमें उसको ज़्यादा point out करना पड़ेगा, especially in your body paragraph. Second, then physiotherapy, so mobility issues even we can mention. Community nurse, daily care team और doctor है यानी GP है. Then more clinical details we need to write. Then select the relevant case note. This is one of the most important OET skills. Do not copy all notes into the letter. You can include the current condition, relevant medical history, treatment given, required follow-up, any allergies, functional status. So these are the main information. Even you can include your case note. So what are the information? You can exclude the unnecessary old history. If current patient की age 80 year है और maybe उसमें childhood history mention है, then no need to write any history related to childhood, because अगर current condition patient की cardiac की है और आपकी past medical history में हाइपरटेंशन मेंशन है, डायबिटीज मेलिटस मेंशन है, उसके अलावा उसकी चाइल्डहुड इलनेस मीजल्स मम्स और रूबेला ये सारी हिस्ट्री मेंशन है. सो नो नीड टू इंक्लूड द चाइल्डहुड हिस्ट्री बिकॉज एट दिस टाइम पेशेंट की 80 ईयर की एज है और पेशेंट अभी करंट आपके पास कार्डिक वेस्कुलर अटैक से आया है. सो हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, डायबिटीज मेलिटस है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री एज कम्पेयर टू चाइल्डहुड इलनेस. So unnecessary old history you need to exclude. Irrelevant normal finding. Irrelevant normal finding means like आप अभी कुछ केस नोट अगर सॉल्व करते होंगे, सो इवन यू कैन सी कि कुछ केस नोट में मल्टीपल डेट्स होती है, मल्टीपल डेट्स के साथ रिपीटिशन में वाइटल साइंस, रिपीटिशन में ब्लड एग्जामिनेशन. अगर रिपीटिशन में इवन यू कांट राइट, आप बार बार रिपीटिशन में बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में हर एक इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते. तो उसमें जो एक एलिवेशन है, ठीक है, या फिर एकदम से डिक्लाइन लेवल है, तो उन इंफॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई. even you can exclude the repetition, repeated information. So be careful with your trainer. Common pattern like your past tense admission or treatment, or present tense current condition, present perfect recent completed action, and future request for follow up care. सो आपको अपने केयरफुल रहना है विद योर टेंसेस. ठीक है, तो मेन कॉमन जो पैटर्न आपका ओईटी का है, जैसे पास्ट टेंस है एडमिशन, ठीक है, ट्रीटमेंट जो भी हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया, लाइक एंड प्रेजेंट टेंस में जो भी पेशेंट की करंट कंडीशन है, प्रेजेंट परफेक्ट बट वी हैव डन रिसेंटली like various blood examination were conduct sorry has have been conducted. So have been, has been. Then future requests like his sutures will be removed. सो फॉलोअप केयर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए फ्यूचर और फ्यूचर टेंस. Then use the linking words naturally. Good connector which can improve the flow of your writing task. For example, therefore, however, subsequently, as a result, to show the result, in addition, besides, apart from this, consequently. So these are the some good connectors even you can use in your OET writing task. Okay. So this is for today's class. So in the next class, we will